Today in this video, once again I am going to discuss about the use of the Newton's second law to determine the acceleration in some practical case. And already I have discussed the first case in which block placed on a smooth horizontal plane. Under this case, first point what I have taken here, which already I have discussed in the previous video, when we apply a horizontal either pulling force or pushing force here. Second case, force inclined at some angle in pulling. Suppose if the block is placed on a horizontal surface and this block is pulled, a pulling force F is applied on this block at some angle, not horizontally. Suppose this pulling force F is applied on this block which placed on this surface, horizontal smooth surface at angle theta. So what I am saying, suppose this one is a plane smooth horizontal surface, a block of mass M be placed over it. So weight of this block mg will act downward, normal reaction R will act upward. And now a pulling force, this force is called pulling force. And when we apply the force like this one is called pushing force. So here, when a pulling force is applied at an angle theta. Suppose a pulling force F is applied at an angle theta from the horizontal, then how can we calculate the acceleration in this block? So how can we find it? For this purpose, pulling force F makes what angle with the horizontal? Theta. And already I have told you how can we take the component. So component of F along the horizontal direction is F cos theta. And second component which is perpendicular to it, this one is what here? F sin theta. So F cos theta and F sin theta is the component of F in horizontal direction as well as in vertical direction. And once when you will take the component of F, जब आप F का component ले लिए तो अब इस F को लेने की जरूरत नहीं है. Now you will deal with these component. And now if anybody asks you how many force is acting on this body, तो कहोगे normal reaction R and this component F sin theta is upward direction. Weight mg is in downward direction and this component F cos theta in horizontal direction. अब वहां पे इस F को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस F का कंपोनेंट ले चुके हैं. तो जब हम कंपोनेंट ले लेंगे तो फर्दर फिर उस फोर्स को काउंट नहीं करेंगे. एंड नाउ यू सी overall neither this block, suppose this block moves on this smooth surface with the acceleration a acceleration से block move कर रहा है. So now you see here how many forces acting in upward direction, normal reaction R and this component F sin theta, both are acting in upward direction. And how many forces acting in the downward direction? mg. But motion of this block is taking place horizontally. इसका मतलब ये कंपोनेंट R plus F sin theta, total force acting in the upward direction is balanced by the mg. क्योंकि ये ब्लॉक ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो नीचे की तरफ, इसका मतलब नेट अपवर्ड फोर्स R plus F sin theta. This one is total upward force which is balanced by mg. So this one is equal to mg. Or you can say R is equal to mg minus F sin theta. In this way you can find out the normal reaction R. And now you see here F cos theta and acceleration is taking place in the direction of F cos theta. It means this F cos theta is responsible, this component of the force is responsible for producing the acceleration A. So by Newton's second law of motion, you can say force is equal to mass into acceleration. So now I place a force. Which force is responsible for this acceleration? F cos theta. So you will write here F cos theta. This one is net force which is responsible for, or this component of the force is responsible for the motion of the block with the acceleration A. So this F cos theta is equal to mass into acceleration. Or you can say A is equal to F cos theta. So in this way you can find out the acceleration of this block when a pulling force is applied on this block at an angle theta from the horizontal. So in this way first you will make a equation and then finally you will write
the expression for the acceleration of this block. Now in the same second case, what here? Force inclined at some angle in pushing. Earlier we have taken pulling और अब क्या लेना है? Pushing. So if suppose a block of mass m, suppose this one is a block of mass m which is placed on a smooth horizontal surface, and this one is pushing force F is applied on this block which makes angle theta with the horizontal. जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है किसी ब्लॉक को हम खींचे और दूसरा होता है किसी ब्लॉक को हम पुश करें. So in the both cases here, how much the acceleration and what is the normal reaction? So in this case, again we will take the component. So now F is acting along this one. So component of F, now you see this F makes what angle with this horizontal? Theta. So component of F in this direction is F cos theta, and component of F in this direction is F sin theta. क्योंकि ये F का component इधर लेंगे जिसका arrow इधर ही रहेगा, और इसका component जब ऐसे ले आएंगे तो ये F का component F sin theta नीचे होगा. And now you see here कि how many force is acting upward direction. So here upward force is only R. How many force is acting in the downward direction on this block? So downward direction is weight of this block mg, and this F sin theta component is also acting in what direction? Downward direction. But this block is neither moving upward nor downward. It means total upward force is balanced by the total downward force. So what is the total upward force? Only R. Total downward force F sin theta plus mg. So you can say this upward force is balanced by the downward force. So you can say R upward force, which is balanced by total downward force F sin theta and plus mg. And now this component F cos theta is responsible for the motion of this block. And due to this component F cos theta, suppose this block moves on this horizontal plane with the acceleration A. So by Newton's second law of motion, you can say force is equal to mass into acceleration. But which component is responsible for this acceleration? F cos theta. So you will write here F cos theta. By Newton's second law of motion, this is equal to MAR. E is equal to F cos theta upon. And now you see, either in case of pulling or pushing at the angle theta from the horizontal, normal reaction is different, but acceleration is remain same. Acceleration there is also how much? F cos theta upon m. Here also is what here? F cos theta upon m. But there was the normal reaction how much? Their normal reaction was mg minus F sin theta. But here normal reaction is mg plus F sin theta. And याद रखिएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा यहाँ पे कि friction is directly proportional to the normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा आएगा इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ज्यादा हो जाएगा. अब मैं आपसे ये पूछूं कि किसी ब्लॉक को पुश करना आसान है कि पुल करना आसान है? Which one is easy? So pulling is easier than pushing, which I will discuss in the chapter friction. Now next case, second case, block placed on a smooth inclined plane. Earlier that block was placed on a smooth horizontal plane, but here on what plane? Inclined plane. Suppose this one is an inclined plane. ये एक inclined plane है, which makes what angle with the horizontal? Which makes angle theta with the horizontal. And when a block of mass m, suppose this block of mass m be placed on this inclined plane, so with what acceleration this block will slide? ये किस acceleration से ये block slide हो रहा है? मान लो this block is slide with the acceleration a. Again you resolve the component. First your aim, this inclined plane makes what angle with the horizontal? Theta. So since this block of mass m which is placed on this inclined plane, its weight mg is always at downward.
वो हमेशा इस प्लेन के डाउनवर्ड काम करेगा, विच इज एच। एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा हो उस सरफेस से परपेंडिकुलरली जो रिएक्शन की फोर्स लगेगा वो कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि प्लेन इंक्लाइंड प्लेन तो ये है और वेट mg हमेशा डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस प्लेन ऑन दिस ब्लॉक will act along this one, which makes this normal reaction R makes angle 90 degree with this plane। वो हमेशा इस प्लेन के साथ 90 डिग्री ही बनाएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया है नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्शनरी फोर्स किसी भी सरफेस का जो भी लगता है बॉडी के ऊपर वो हमेशा उस सरफेस से कितने एंगल लगेगा? 90 डिग्री के। तो वेट mg डाउनवर्ड फ्रॉम हियर and reaction of this plane on this block on this mass will act along this one, and this reaction force makes what angle with this plane? 90 degree। When you will extend this reactionary force, इसी reactionary force को जो normal reaction का अलग इसी को पीछे बढ़ाएं, when you will extend this reactionary force, so this extending portion and with this mg दिस एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा इनके बीच में। किसके किसके बीच में? याद रखिए मैंने क्या कहा, जो वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन जो ये थी इसी को हमने एक्सटेंड किया पीछे। तो ये वेट एंड द एक्सटेंडिंग लाइन ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन इन द बैकवर्ड, दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल व्हिच ऑलरेडी यू हैव प्रूव्ड इन द क्लास 10। वहां पे इंक्लाइंड प्लेन दिया था तो वहां पे था। एंड नाउ कंपोनेंट ऑफ mg, अब बताइए ये mg इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ mg along this direction always you will take mg cos theta and perpendicular to this mg cos theta the component of mg along this one, but this one is perpendicular to mg cos theta। इसका मतलब mg cos theta और mg sin theta के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 90। and already I have told you the angle between these two components should be 90 degree, और जिसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं वो हमेशा इन दोनों कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए। so mg cos theta along this one and other component mg sin theta is perpendicular to mg cos theta along this one, and this mg should be lies between these two components। ये हो गया division or resolving of the weight mg। एक्चुअली mg क्या है? mg इज ए फोर्स, वेट इज ए फोर्स। अब देखिए हाउ मेनी फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। अगर आपसे पूछिए इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो व्हेन यू विल कंसीडर द कंपोनेंट, मैंने पहले बताया कि जिस चीज का कंपोनेंट अगर ले लें तो फिर उस फोर्स को कैलकुलेट या उस फोर्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो आपने mg का कंपोनेंट लिया mg cos थीटा mg sin थीटा, तो फिर mg की बात मत करिएगा। नाउ यू सी हाउ मेनी फोर्स इज एक्टिंग। नॉर्मल रिएक्शन, one component of mg weight mg cos theta, this one is mg sin theta, this one, but this block is neither moving upward nor downward, it means R is balanced by mg cos theta। so you can say here R is equal to mg cos theta, this one R upward और दिस वन इज डाउनवर्ड कंपोनेंट mg cos थीटा, बोथ भी बैलेंस। मैंने कहा ना इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम इसका कंपोनेंट ले चुके हैं। एंड नाउ यू सी हियर ये तो इसको बैलेंस कर दिया, अब बचा कौन सा फोर्स हमारे पास? केवल mg sin थीटा। एंड नाउ यू सी mg sin थीटा इज एक्टिंग along this inclined plane in the downward direction, and acceleration is also taking place along this one। what acceleration? A। It means this component mg sin theta is responsible for the acceleration A in this block, and according to Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration। So what force you will take? mg sin theta is that force, mg sin theta is equal to mass into acceleration। क्योंकि weight is a force, mg क्या है? वेट, वेट इज अ फोर्स, और उस mg sin थीटा का जो ये कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट इस ब्लॉक को क्या करता है? ये एक्सीलरेशन a प्रोवाइड करता है। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, और m is cancelled by m, so you can say a is equal to g sin
इसका मतलब कोई भी ब्लॉक अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा जाए तो किस एक्सीलरेशन से वो स्लाइड होती है, जी साइन थीटा। अब देखिए अगर इसी ब्लॉक को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते जाए तो थीटा बढ़ता जाएगा, और जब इसको एकदम ऐसे कर दे तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो उस समय किस एक्सीलरेशन से ब्लॉक गिरेगा, A is equal to G sin 90 और sin 91। इसका मतलब उस समय ब्लॉक किस एक्सीलरेशन से गिरता है, ऊपर से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। नाउ थर्ड केस आई एम टेकिंग, फोर्स F is applied upward along the inclined plane। इसके पहले वाले केस में हमने इंक्लाइंड प्लेन पे बस ऑब्जेक्ट को रख दिया था और ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही थी विद द एक्सीलरेशन, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उस ब्लॉक को F फोर्स लगा के अलोंग इंक्लाइंड प्लेन हम इंक्लाइंड प्लेन की तरफ खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। देन इन दिस केस हाउ कैन वी रिजॉल्व, तो इतना तो मैं आपको बताया ही था कि इफ दिस वन इज ए inclined plane which makes angle theta with the horizontal, a block of mass m is placed over it, then the weight of this block mg will act downward and reaction of this plane, इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन ये लगाएगा ये ब्लॉक या ये प्लेन जो है वो इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो R, जो कि इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। And when you will extend this normal reaction line in the backward direction, then with this component, with this mg, this will make angle theta। जो एंगल ये रहेगा वही एंगल ये रहेगा। In your book it is given alpha, तो यहाँ पे अल्फा ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now component of mg along this direction mg sin theta, mg cos theta, sorry, mg cos theta, and along this direction is mg sin theta। इतना तो मैंने आपको पहले ही बताया था। Or now in this case, this a force F is applied on this block along this inclined plane in the upward direction. And suppose overall this block moves with the acceleration A in the upward direction. और हम मान ले रहे हैं कि block of mass M moving along this inclined plane with the acceleration A upward. अब फिर देखिए हमने mg का कंपोनेंट ले लिया mg cos theta और mg sin theta। What is the angle between mg cos theta and mg sin theta? mg cos theta and mg sin theta is a component of mg, और mg cos theta और mg sin theta इन दोनों कंपोनेंट के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। और जिसका कंपोनेंट ले रहे हैं मतलब इस mg, ये हमेशा इन दोनों कंपोनेंट के बीच में, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट इसके क्या है, बॉडी गार्ड। तो नाउ when we will take the component of mg, अब mg को काउंट मत करिए। अब देखिए how many force is acting on this block। एक तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन R, ये कंपोनेंट mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा, और ये हो गया फोर्स F। बट यू सी दिस ब्लॉक इज नाइदर मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ R, ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट इज राइट, R is equal to mg cos theta, the position। And now you see, now how many forces acting, rest force, one is F and this one is mg sin theta। but अब देखिए अब ये F और mg sin theta एक ऊपर की तरफ और एक जस्ट अपोजिट उसके इधर की तरफ, और हम मान ले रहे हैं कि अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये फोर्स F जो है वो बढ़ा रहा होगा mg sin theta से, तभी ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। नहीं तो अगर ये ब्लॉक हम कहते हैं रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये रेस्ट में तभी आएगा जब F mg sin theta के बराबर हो जाए, and both is acting in opposite direction। But what I am saying here, this block is moving upward with the acceleration A। तो आप देख लीजिए किस फोर्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, और जिस फोर्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा हमेशा वो फोर्स बड़ा होगा। तो इसका मतलब F बड़ा है किससे, mg sin theta। What is the net force acting on this block in the upward direction? लिखेंगे F minus mg sin theta। minus mg sin theta क्यों लिखा, because this mg sin theta is acting opposite to it। So now F minus mg sin theta, this one is the net force acting on this block in what direction, upward direction।
And according to Newton's second law of motion, this net force is equal to mass into acceleration. And from here you can say acceleration of this block is equal to F minus mg sin theta upon M. Means acceleration is equal to F minus mg sin theta upon M. So in this way we can find out when a force F be applied on this block, then this block will move with what acceleration along this inclined plane in the upward direction. So it will move with this acceleration along the inclined plane in the upward direction. बस आप कंपोनेंट निकालिए और फोर्स को देखिए कि हमारा ब्लॉक किधर मूव कर रहा है और कौन कौन किसके डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, लेकिन ब्लॉक का मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे हैं। Now, next case I am taking here. Force F is applied downward along the inclined plane. इसके पहले हमने फोर्स को अपवर्ड लगाया था, अब फोर्स को डाउनवर्ड लगाया। तो पहले तो क्या है, सब कुछ वैसे ही है। मास ऑफ द ब्लॉक सपोज m, mass of this block is m, weight mg at downward, normal reaction r which makes angle 90 degree with this inclined plane. When you will extend this normal reaction line, it makes what angle with this weight line? This angle theta. If this angle theta, so this one is theta. Component of mg around this direction mg cos theta. Perpendicular to mg cos theta in this direction mg sin theta. अच्छा, एक चीज और हो सकता था, ये कंपोनेंट mg cos theta मैं इधर कहा, आप कहेंगे सर इधर भी ले लें तब भी तो ये भी तो mg sin theta होगा और ये इसके परपेंडिकुलर भी है, लेकिन इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये mg हमेशा इन दोनों कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए। सो इफ दिस वन इज mg cos theta, so this one is mg sin theta. और now a force F is also applied along this inclined plane in the downward direction, ऐसे। And suppose now this case, this block is moving with the acceleration a along this inclined plane. So what equation you will make? How can we find the expression for the acceleration in this case? अब आप देखिए how many force is acting on this block. mg का कंपोनेंट ले लीजिए, इसलिए mg को नहीं लेना, कौन को इसको लेंगे? r mg cos theta, mg sin theta और ये force F. But this block is neither moving upward, ना तो r के डायरेक्शन में है और ना तो mg cos theta के डायरेक्शन में। इसका मतलब ये r and mg cos theta both will be balanced to each other. You can say r is equal to mg cos theta. This is equation 1. And now acceleration डाउनवर्ड, और जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो भी mg sin थीटा भी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है और f भी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है। फॉर द टोटल फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन तो कहोगे f प्लस mg sin थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसके पहले वाले में हमने क्या लिया था? mg f माइनस mg sin थीटा। क्यों? क्योंकि वहां f और mg sin थीटा दोनों का डायरेक्शन क्या था? अपोजिट था। But here both are acting in the same direction. So what is the net force acting along this one? So F plus mg sin theta. And according to Newton's second law of motion, this net force is equal to mass into acceleration. So A is equal to F plus mg sin theta upon M. And in this way you can find out the acceleration of this block. If this block be placed on an inclined plane which makes angle theta with the horizontal and a downward force F is applied across it, along it. So with this acceleration, if this block will be moved along this inclined plane in the downward direction, and you can calculate the acceleration like this one. So dear student, today we go through this topic what I have discussed here and also look in your book here. And in the next video, I will give this some more diagram like the free body diagram for taking that